Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about life cycle of meiosis. Basically on the top of the meiosis gametophyte are two kind of structure that produce gametes, the antheridium and archegonium. The antheridium is basically a sac-like structure. It is spherical that consists of developing sperm surrounded by a layer of cells called jacket. While on the other hand, the archegonium is a flask-shaped structure that reproduces the egg. It has a tubular channel leading to egg at its base. Each archegonium contains one egg. Now when the sperm get mature, the outer capsule split off and the flagellated sperm, right? We can see here flagella is present, and through rainwater it flowed to reach the egg where it fuses, and then a diploid zygote is produced. Now here the zygote is produced to an in number, but before that it is haploid. The zygote divide by mitosis and the sporophyte generation began to grow within the archegonium, eventually develop into a mature sporophyte which grow on top of gametophyte. We can see this is mature sporophyte which develop from zygote. The sporophyte are long stalk and bear a capsule at one end. Within the capsule, meiosis takes place. Within this capsule, the meiosis takes place, producing haploid spores. The tiny spores are released and distributed by wind and water. This is the spores which are released from this capsule by a process of meiosis. These spores germinate. They give rise to a multicellular filament known as protonema. This is protonema. Germinating spores. Turn the protonema develop into a mature gametophyte plant. Thus, in this meiosis, other non-vascular plants, the gametophyte generation is dominant stage, and sporophyte is dependent on the gametophyte. Here, this protonema now develop into a gametophyte. Again, this is male plant, and this is the female, and this is antheridium, archegonium. This is flask shape, this is sac-like structure. This blue color represent diploid sections, while the yellowish color represent haploid. Right? Let us discuss. यहाँ पे different detailed life cycle of non-vascular plants की given है. We use the meiosis life cycle to represent the group. Gametophyte generations जो होती है basically वो haploid होती है and gamete producing stage in plant life cycle. Although the cell of gametophyte have the haploid number of chromosomes. Gametophyte में haploid number of chromosome होते हैं. Not all of them function as gamete, right? At the top of meiosis gametophyte are two kind of structure. Top of gametophyte plant में दो structure होते हैं, antheridium and archegonium. Antheridium sac-like structure होता है और कंसिस्ट करता है developing sperm surrounded by a layer of cells called jacket. The archegonium जो है वो flask shaped structure होता है जो कि egg को produce करता है. इसमें एक tubular channel होता है that lead to the egg at its base. ये usually only one egg को एक हर archegonium में produce होता है. Usually जब sperm जो है when sperm mature तो जो outer jacket है एंथरीडियम का वो स्प्लिट हो जाता है, फ्लैजेलेटेड स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म स्विम करता है थ्रू फिल्म ऑफ ड्यू और रेन वाटर से टुवर्ड आर्चिगोनियम और इसी तरह कंटिन्यू करता है डाउन द चैनल ऑफ आर्चिगोनियम. क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हो सके. जब स्पर्म और एग का न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होता है. जाइगोट जो है फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफाइट जनरेशन का. जाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू, रिमेंबर इट, एंड स्पोरोफाइट जनरेशन बिगिन टू ग्रो विद इन द archegonium and eventually develop into a mature sporophyte. Division mitosis से होती है और mature sporophyte develop होता है which grow out on the top of gametophyte.
नाउ जो स्पोरोफाइट होता है वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग स्टॉक होती है विद अ कैप्सूल। कहाँ पर होता है? एक एंड पर होता है। और इस कैप्सूल में मियोसिस होती है जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। टेरी स्पोर्स जो है वो रिलीज होते हैं और वेट और वाटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और गिव राइज करते हैं प्रोटोनेमा के थ्रू। प्रोटोनेमा, अब जो प्रोटोनेमा है वो डेवलप करता है इनटू अ मैच्योर गैमेटोफाइट प्लांट मोसिस में, और दूसरे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट स्टेज है, और स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करती है गैमेटोफाइट पे। दिस इज ऑल अबाउट मोसिस लाइफ साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।